कल क्या किया था हमने? तो प्रॉब्लम कर रहे थे, याद है किसी को? TXY diagram. Right, so we had done this example 8.9 part A, right? part A हो गया था सबका? Yes, sir. part A. If not, then let's move on to part B. Calculate temperature and Y1 at 65 kilopascal and X1 equal to 0.4. So now X1 is given, we have to find Y1. What is this thing? And X is given, we are finding Y. What is it? What is it called? एक नाम है इसका. Is called bubble point. When the temperature is given and composition in the liquid phase is given, you are finding the composition of the Y phase, right? And temperature. ठीक है? Any doubts on that, whether it is bubble point or not? Okay, so how will you solve this? How to solve this thing? Any ideas? पार्ट ए का तो ये सॉल्यूशन है, आपने देखा होगा बुक पे. पार्ट बी देखा किसी ने घर पे? I have not seen part B in the at home. देखा किसी ने बुक में जाके? Nothing wrong with it. सॉल्यूशन है वहाँ पर दिया. Yes sir. So कैसे करने का? समझ में आया कैसे करने का? Sir, yes sir. उन्होंने डिफरेंट टेम्परेचर डाले एंटोनीज इक्वेशन में और उसके बाद पार्शियल प्रेशर्स निकले एंटोनीज इक्वेशन यूज करके और उसके बाद टोटल प्रेशर 65 है ना, तो P इक्वल टू P1S प्लस P2S करके 65 आना चाहिए, ऐसा किया तो वो टेम्परेचर चेंज करते गए जब तक 65 नहीं आता तब तक. So if you remember, if I can show you this thing, let me see कहाँ गया. Okay, let me share this with you, then you'll know exactly what I mean. Can you see this construction of TXY diagram? Yes sir. Right, this we had seen. This I told you the procedure for constructing TXY diagram. So pressure is constant. हमको दिया हुआ है. Pressure कितना दिया हुआ है? 65 kilopascal. This is given, right? So now we have to find out temperature X and Y. So assume a temperature between boiling point of pure liquids at given pressure. Right? We start with an assumption of temperature. Right? Then at this temperature, calculate the vapor pressure of pure liquids using Antoine equation. P1S and P2S calculate करने का. Then calculate X1 using this equation because you know P1S, you know P2S, and you know P. We can find out X1. And then we can calculate Y1 using Raoult's law. So this is what we are doing. These are the steps we have to follow actually. ये आपको steps दिया है पहले, but now you have to correlate with the problem. ठीक है? समझ में आया? Yes right? sir. So now we need to assume a temperature. Right? Let's see the problem now. Right? So this is a problem. Pressure is 65 kilopascal, right? And composition is X1 equal to 0.4. Barabar.
So now boiling point of P1 and P2 कितना है, कुछ पता है अपने को? और ये 1 and 2, component 1 and component 2. Yes, okay. नहीं पता, right? You don't know the boiling point. But if you look at previous part A temperature was 327 kilopascal and pressure was 65 kilopascal, right? तो प्रेशर अभी भी 65 kilopascal है, हमारे को टेम्परेचर फाइंड करने का है फॉर x1 इक्वल टू 0.4. तो फर्स्ट पार्ट में x1 कितना आया था? हाउ मच वाज x1 इन पार्ट 1? 0.5685. 0.56 था, बराबर. सो and the temperature was 327 Kelvin. So we have to try a temperature somewhere around 327. You can assume more, you can assume less, doesn't really matter. Assume a temperature which is say 330 or 325, doesn't matter. Iteration करना पड़ेगा because it's trial and error procedure. Okay. So यहाँ पर जो बुक में दिया है ये assume 330, but suppose we take 325 and calculate Antoine vapor pressure of P1 and P2, 1 and 2. Calculate 325 करते हैं. Let's not follow exactly what the book has done because he knows the answer. We don't know the answer, right? Exam में ऐसा कुछ आ गया तो हमारे को assume करना पड़ेगा temperature, and we have no idea because we don't know the boiling point of component 1 and component 2. We can find out from Antoine equation, but right now we don't know. Okay, so suppose we assume 325, round figure, 325 as the temperature. Then we calculate P1s and P2s. Can you do that? Because this trial and error. Trial can be wrong Yes, also. sir. Right? Trial assumption can be wrong also. So we have to really take a wrong assumption and see where we go. Then you will understand the process better rather than just following what the book has done. Okay? So calculate P1s and P2s at 325 Kelvin. Oh, today it's quite hot. हो गया क्या P1s P2s?
Yes, sir. What is the value of P1s and P2s? The P1S is 79.3763 kilopascal and P2S is 36.4011 kilopascal. सबका हो गया क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. बराबर है, इतना आया आंसर 79.37 Yes, into sir. 0.4. Okay, so once we know P1s and P2s and we know x1 0.4, can we find out P, pressure, total pressure? E is equal to P2s Yes, sir. plus bracket P1s minus P2s into x1. Find out P. Sir, 53.588. 53.58, right? So 53.5 is very much less than 65, right? हमारा total pressure दिया हुआ है 65 kilopascal. That means our temperature is very low. समझ में आ रहा है? Because we don't know what temperature should be. We assume Yes. certain. Because the pressure should come as 65. ये calculate करने के बाद आपको आंसर चाहिए 65. Till we get pressure equal to 65, we have to keep changing temperature. समझा क्या? Okay, so Yes, that means the pressure कम है, that means we have to increase the temperature. Temperature बढ़ेगा तो vapor pressure बढ़ेगा, P2s बढ़ेगा, P1s बढ़ेगा, P1s बढ़ेगा, P2s बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, बराबर? Because x is constant. Is that understood? Yes, sir. Right? Yes. So now we assume temperature say 330 Kelvin, round figure again. जो book ने किया, he knows the answer, that's why he has used 330 directly, but we don't know the answer, we can use any value. And but you know the reason why we are changing the temperature, that is important thing. अगर प्रेशर कम आ रहा है यानी टेम्परेचर कम है, इसलिए प्रेशर वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम है इसलिए टोटल प्रेशर कम है. सो वी इंक्रीज द टेम्परेचर टू 330 केल्विन एंड देन फाइंड आउट व्हाट इज द P2s and P1s. Repeat the calculations. हो गया P1s P2s? Yes, sir. कितना आया? P1S 94.359 kilopascal and P2S is 44.0225. Okay, so P1s P2s आ गया, now we can calculate P again for this temperature. Find out P. What is the pressure? So 64.1571. Okay, so 64.15 is definitely less than 65 kilopascal, right? Our pressure is 65. That means this temperature is slightly lower, right? जितना चाहिए हमारे को pressure उतना नहीं आया, थोड़ा कम आया, right? So now we have to increase the temperature a little bit. This is 330.4 लिया, we can take 330.5 also, doesn't really matter. हमको पता नहीं रहता आंसर exactly.
So let us take 330.5 and see what happens. Even number करके 0.5 करके increase कर रहे हैं. So find out P1S and P2S at 330.5. वो अगर P1S P2S Yes, sir. क्या है वैल्यू P1S P2S? So P1S is 95.97 kilopascal and P2S is 44.8507. Okay, so now find out what is P, total pressure. So 65.30. 65.30, right? So 65.3 is very close to 65, but still it is more, right? So then we have to reduce it because ज़्यादा हो गया तो कम करना पड़ेगा, कम और ज़्यादा करना पड़ेगा, right? So you can select that 65.4 or rather 330.4 Kelvin and repeat the calculation. So find out P2S and P1S at 330.4 and find out P1S and P2S and then find out P. हो गया क्या? P1S P2S. P1 is 95.65 Yes. and P2S is 44.68. Okay, so P कितना आया? 65.06. Okay, ठीक है. So now it is very close to 65. We know that temperature is 330.4 Kelvin. Okay, so that is the procedure for finding the temperature. When the temperature is not given, because Anton equation में temperature चाहिए रहता, so we have to iterate on temperature. समझ में आई लोगों को बात? Pressure is easy because temperature दिया रहता है, तो Anton equation हम directly use कर सकते हैं. But since here temperature is not given, pressure is given, so we have to assume a temperature, calculate P1S, P2S, then calculate P, total pressure, and see if it is matching the
given pressure. If it is not, then you have to either increase the temperature or reduce the temperature. दोनों किया हमने. पहले start किया 325 पर, then we increased to 330, then we increased to 330.5, then we reduced to 330.4. So we have to basically go till we reach that given pressure. Hello, sir. Till how much decimal places we have to approximate it? ज़्यादा है. If the pressure is more than the given pressure, then you have to reduce the temperature. If the pressure is more than the temperature, given pressure, then reduce the temperature, and if it is less, then increase the temperature. नहीं सर, मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए गिवन प्रेशर तक? 1 decimal place is enough. 65.1 तक ठीक है. ओके. 0.00 होना जरूरी नहीं है. 65.1, 64.9 भी चलेगा. It is close enough. Any doubts so far? किसी को क्वेश्चन है अभी before you proceed further? No, sir. क्वेश्चन है किसी को? No, sir. Okay. So let me show you this thing. So can you see this? Okay, so what I'm going to do is I'm just going to write the rule which I told you now. Right? Here, can you see this? If the pressure calculated is greater than the given pressure, जैसे हमने देखा 330.5 Kelvin per, pressure was more than the given pressure, which was 65 kPa. So we reduce the temperature. If the calculated pressure is less than given pressure, this is 325 per था, it was less than 65 kilopascal, then we increase the temperature. कितना increase करना, कितना decrease करना, that is our judgment, and that judgment will come based on your experience. Okay. Any doubts or questions on this guideline? I can give you a hint, but that will be just a hint. If you see this, okay, let me go back. So if you look at your value given, जो हमने calculate किया 325 पर, the total pressure was 53 kilopascal, right? बराबर है? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. So pressure was 53 kilopascal at 325 Kelvin, and at 330.5 it was 65.3. बराबर? ठीक है. So you can roughly interpolate between these two and temperatures. Pressure and interpolation पता है आप लोगों को? मैथमेटिक्स में पढ़ा interpolation? Yes, sir. Right? So interpolate किया. Suppose यानी 325 330.5, that means 5.5 degrees के change में pressure कितना change हुआ? Around 12 kilopascal change हुआ. और लेट अस से 325 330 5 डिग्रीज में कितना चेंज हुआ?
53.58 and 64.15, right? At 325 it was 53.58 and at 330 it was 64.15. So for 5 degrees change in temperature, the pressure change was roughly 10 point something kilopascal, right? बराबर है 5 डिग्री के लिए 10 किलो पास्कल चेंज हुआ तो 1 डिग्री के कितना चेंज होगा रफली इट्स इंटरपोलेशन इट्स नॉट एग्जैक्ट इट गिव्स एन आइडिया डिग्री कितना जाएगा रफली 2 किलो पास्कल राइट so for 5 degrees change in temperature the vapor pressure or total pressure changes by 10 kilopascals. So for 1 degree change in temperature, it will be roughly changing by 2 kilopascal, right? और हमारा जो है 64.15, that means around 0.5, 0.7, 0.8 है. So roughly increase the temperature by 0.5. So it's not exact. It's not linear correlation. Vapor pressure and temperature is not linear correlation. It is exponential. तो हमारा रफली आइडिया मिल जाता है कि 2 डिग्री से कम होना चाहिए. You can assume that 331 or 330.5 ऐसे assume किया हमने. So it's a trial and error. It all depends on how good your guess is. That's all. ठीक है? Any questions on this part before we go to the second one or third one? Okay, there are no questions. Let us solve part C, which is find the pressure and Y1 at 327 Kelvin and X1 equal to 0.4. Right? So temperature is given now, C part में. So it is easy. X1 equal to 0.4. So we have to find out P and Y1. It is easier because temperature is given, it becomes easier. Temperature नहीं दिया रहता तो trial and error हो जाता है. Understand this part. So now we have to find out P1s and P2s at 327 Kelvin. वो हमारे पास है already, right? Part A में निकाला था हमने 327 पर. We already have the P1s and P2s at 327 Kelvin. So what you have to do is find out pressure. It's very simple. ठीक है? समझ में आ रहा है? So find out P and then Y1. Is it understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Calculate P because you know P1s and P2s which is already done for 327 Kelvin. Find out total pressure and find out Y1. $57.634 kPa. Okay, and Y1? 0.59076. Okay, good. So now you know how to calculate this. Is given temperature, it is very easy. Given pressure, it is little more difficult because you have to assume temperature. ठीक है? सबका हो गया ये? नहीं सर, 1 मिनट. यस सर. हो गया? सबका हो गया? देवेंद्र हो गया क्या? हाँ सर, 1 मिनट, Y1 निकाल रहा हूँ. हाँ, निकालो जल्दी करो जल्दी. These are simple calculations. हाँ सर, हो गए. So basically what you have done is same thing. यार जो दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आपको construction of PXY diagram? Can you see this? हाँ सर.
So basically we are following this step only. Temperature is given 327 Kelvin, right? So we can calculate the pressure because P2S is known, P1S is known, X1 is known. And then we can calculate vapor composition from Raoult's law. Right? यही किया हमने. Calculate vapor pressure, P1S and P2S using Anton equation. Calculate total pressure for given composition. यहाँ पर सबके लिए था 0.4 के लिए किया हमने P equal to calculate किया. And then we calculated Y1. Right? So essentially we are looking at PXY diagram. Right? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? Because these steps are already given to you, but I am just trying to correlate your calculations to these steps. You understand this PXY diagram and TXY diagram. Essentially that's what we are doing, but only one point. जब पूरा PXY diagram करते हैं, तब we assume 10 values or 11 values and calculate for each point and then draw the graph. There is only one point on the graph. Is that understood? Okay. So now there are no questions. Let us proceed to the next part, which is part D. Calculate T and X1 at 65 kilopascal and Y1 equal to 0.4. Now Y is given instead of X. In part B, X1 was given as 0.4 and pressure was given. Now Y1 is given as 0.4 and pressure is given. We have to find T and X1. Because we assume the same thing. We have to follow the same procedure, right? We have to find the same way, assume a temperature and find out temperature till total pressure is equal to 65 kilopascal. Okay. So now you hint, assume a temperature which you think will give us 65 kilopascal and Y1 equal to 0.4. Sir, means we assume one temperature and check total pressure and Y also this time. Yeah, see total pressure, how do you calculate total pressure? P2S plus P1S minus P2S into X1. But X given to us No. is not given, right? So now you have to write in terms of Y. कैसे करेंगे? How will you calculate? How will you write in terms of Y? Okay, so let me show you how to do that. It's very simple. टोटल प्रेशर के फॉर्मूले से सर x1 को कन्वर्ट करने का, फिर हाँ. y के टोटल प्रेशर का जो फार्मूला है उस y में कन्वर्ट करने का, उसको Yes, correct. x1 में कन्वर्ट करने का टोटल प्रेशर फार्मूला. Right. Correct है. ऐसे करने का अपने को. और फिर We know that फार्मूले में x1 P is equal to क्या है? Can you see this? What is P equal to? P2S plus P1s minus P2s into x1. and what is Y1? P is equal to X1 P1S, right? P1s divided by P. Right. So what we can do is we can write P is equal to X1 P1S upon Y1, right? And what is X1? From here.
ठीक है, and we put this here. What will get is P is equal to बराबर है क्या? Yes, sir. हाँ सर, यस सर. But now what we want is P, right? So actually P दोनों साइड में आ रहा है, P बराबर ना? and y1 P1. P is on both the sides, right? So we'll have to somehow do it, bring P on one side. How to do that? So not need to do this, na. If we substituting values, then one unknown and one equation we can solve by. Yeah, you can do that. See, but pressure is not known, ना? तो right hand side में P है ना? Yes, The sir. pressure is there on both the sides. इधर भी है, इधर भी है. दोनों साइड में प्रेशर, तो ऐसे कैलकुलेट करोगे P2S is known, P1S is known, Y1 is known, but pressure is on both the sides. कैसे करोगे? So bring all the P terms on one side. एक्चुअली मैंने ये शायद किया हुआ ऊपर में. डन इट होगा या ये किया है मैंने ऑलरेडी, डेराइव करके रखा है. Same thing I have done it before, I didn't remember that. So if you see this, P is equal to P2S plus P2S minus P1S into X1. X1 is P minus P2S upon P1S minus P2S. Already किया था मैंने derivation. And Y1 P is equal to X1 P1S. So Y1 is equal to substitute किया इसमें, तो P minus P2S upon P1S minus P2S into P1S upon P. और ये सब rearrange किया. Rearrange all this, you get P is equal to P1S into P2S upon P1S minus Y1 P1S minus P2S. ये सब rearrangement करके रखा था मैंने. I was repeating it actually. जो याद नहीं था, सेम किया हुआ already. So you can use this equation. You know P1S, you know P2S, you know Y1, so you can calculate P. ठीक है? Assume a temperature. So now we know temperature. हमने कितना कैलकुलेट किया है? हमने 330.5 भी किया है, 325 भी किया है, 330 भी किया है. तो क्या टेम्परेचर लेना चाहिए? What temperature should we take? Any idea? Guess क्या करेंगे? You can take any values. 330 already डेटा है आपके पास, right? You have 330 का P1S P2S. Use that 330 का and see what pressure you get. So you already have P1S and P2S at 330 Kelvin. Use that and find out total pressure for Y1 equal to 0.4. Can you do that?
Calculate pressure at 330 Kelvin for y1 equal to 0.4 and P equal to 65. P कैलकुलेट करने का या कैलकुलेट P कितना है? फिफ्टी 55.96 55 है यानी कम आया, राइट? बराबर ना? तो प्रेशर इज लेस देन 65, दैट मींस यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, बराबर? जो पहला रूल बताते हैं, प्रेशर इज लेस देन द गिवन प्रेशर, वी टू इंक्रीज टेम्परेचर. कितना अज्यूम करेंगे? So assume, let us say, temperature equal to 335, round figure में, and see what happens. It means calculate entire equation से vapor pressure at 335, and then calculate total pressure. हो गया P1S, P2S? हो गया क्या P1S, P2S? Sir, P1S is 111.531 and P2S is 52.8892 और प्रेशर कितना and आया? 66.975. Pressure equal to 66.9, right? So 66.9 is definitely more than 65. तो हमारे को टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? Reduce. करना पड़ेगा, right? So let us assume 334 and see what happens. थोड़ा रिड्यूस करने का अपना, राइट? अराउंड 2 डिग्रीज कम करना है. 65 चाहिए हमारे को, 67 आ रहा है, तो 1 डिग्री कम किया हमने टेम्परेचर. रफली हमने देखा था, राइट?
1 डिग्री टेम्परेचर के लिए 2 किलो पास्कल चेंज होता है रफली. So let us change it 334 and see what happens to P1s and P2s and find out total pressure. सर 64.644 आ रहा है टोटल. 64 point 6664. ठीक है. So around ठीक है 64 334 point something आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा फर्क. You can change it 334.2 or so, बट ठीक है इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन. थोड़ा डिफरेंस है. सर You want to- 334.1 पे 64.9 आ रहा है. 334 point 1 हाँ कितना आ पे रहा है? 60.9. हाँ बस ठीक है, इतना काफ़ी है. यू डोंट नीड मोर एक्यूरेट. 0.1 तक बहुत है. सो यू नो हाउ टू डू द इटरेशन नाउ, राइट? सो फाइंड आउट x1 down at this pressure.
What is the value of x1? Zero point 2398. ठीक है, so that is the value of x1, right? Okay, सबका? Any questions on this part before we proceed to the next part? कितने लोग का हो गया? देवेंद्र सर हो एकच मिनिट. हाँ, ठीक है. सिद्धि हो गया क्या? हाँ सर. ओके. वैसे दीक्षित हो गया क्या? No, sir. करो, जल्दी करो. दिस शुड बी वेरी फास्ट. कैलकुलेटर है ना आपके पास? Nupur, are you doing this? शिवानी? हाँ सर हो गया. हो गया. नुपुर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. क्या करती है वो? नेटवर्क का इश्यू है उसका. प्रतीक्षा? हाँ सर. नेटवर्क इश्यू है क्या नुपुर का? सर कर रही हूँ. हाँ. ओके. देवेंद्र हो गया? श्लोक हो गया क्या? कर रहे कि नहीं कर रहे? मेरे को लग रहा है 2-3 लोग ही कर कर रहे रहा हूँ थे. सर. सर सॉल्व कर रहा हूँ. हाँ, अभी करो तक करो. नहीं हुआ है. हाँ जल्दी सर. होना चाहिए. शुड नॉट टेक सो मच टाइम. यस सर. स्टेप्स पूरे बता रहा हूँ आपको, सिर्फ कैलकुलेट करने का है. नहीं समझ में आ रहा तो पूछने का है. ऋतुजा हो गया क्या? हाँ सर हो गए. ओके. हो गया. समझ में आ रहा है लोगों को कैसे करने का? ट्रायल एंड एरर. प्रेशर टेम्परेचर दिया है तो इजी रहता है, बट व्हेन टेम्परेचर इज नॉट गिवन, ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है. यू शुड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कैसे बढ़ाने का, कैसे कम करने का टेम्परेचर. वो अगर आपको समझ में आ गया तो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. इसीलिए हमने इतना टाइम लिया, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ टू एक्चुअली डू दिस इटरेटिव प्रोसीजर. देवेंद्र हुआ क्या? गौरी पटोले हुआ क्या? धनंजय कुमार हुआ क्या? जस्ट रैंडमली टेकिंग नेम्स. दिग्विजय सिंह चौहान हुआ क्या? कर रहे कि नहीं कर रहे लोग? अदरवाइज यू आर वेस्टिंग आवर टाइम हियर. इफ यू आर नॉट डूइंग, इफ यू आर नॉट लर्निंग. खुद करोगे तो समझ में आएगा, पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता है. धैर्य पटेल कर रहा है कि कुछ? हाँ सर कैलकुलेट कर रहा हूँ. करो करो, नहीं समझ में नहीं आने वाला. बुक में पढ़ने से बहुत अच्छा लगेगा, नॉवल समझ लगता है, बहुत अच्छा है. जब तक खुद कैलकुलेटर लेके हाथ में करोगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आने वाला थर्मो. सॉल्व एग्जाम्पल हो, अनसॉल्व हो, कोई खुद करना जरूरी है. टॉपिंग इज वेरी इजी. देवेंद्र हो गया क्या? देवेंद्र?
ठीक, किसी को डाउट है, क्वेश्चन है बिफोर वी स्टॉप दिस एंड दिस लेक्चर? समझ में आ रहा है इटरेटिव प्रोसीजर कैसे करने का? And temperature is given, Yes, sir. it's straightforward. When temperature is not given, we have to assume a temperature, calculate pressure. If pressure is more than the given pressure, then what do? If the calculated pressure is more than the given pressure, then what do? Reduce the temperature. Reduce. Use the temperature. If pressure calculated is less than the given temperature, then what do? Increase the Increase the Increase the temperature. temperature. Increase कितना करना है वो आपको अंदाज लगाना पड़ेगा. That is your just rule of thumb बता आपको. But because it is exponential function, temperature versus vapor pressure, it's not linear function, तो assume करना पड़ेगा values और calculate करके देखना पड़ेगा. Till you get, if it is 65.1 के रेंज में आना चाहिए. 64.9 या 65.1 आ गया तो बहुत हो गया, उससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं चाहिए. ठीक है, ओके.